Sir, I have a very amazing idea, and I really wanted to share it with you. I want to Okay. start my startup, but I'm facing some problems. So if you would guide me in, I would really love Yeah, to. Yes, sure. Siddharth, hold on. First of all, please tell me a little bit about yourself so that, people understand about you. And we will definitely sir. take your So questions, all the questions you have on your startup idea. yes, sir. Thank you, sir. So hello everyone. Myself is Sachdev, and currently I'm pursuing my BTech from IIT Kanpur in Biological Sciences and Bioengineering. And right now I'm in first year. And what's happening is, with Shark Tank and the whole startup season and so many unicorns happening in last 2 years. Yes, sir. So, the startup scene is very hot and everybody has very high aspirations. But very important is, are the fundamentals or basics right? And this is where I think we should focus on our discussions today. Yes, sir. And you can, whatever you want so that not only it helps you in the process, a lot of people can learn from it. Yes, sir. So my first question So was my name that is Rupinder Singh. yes, sir. Yes. Yeah, yeah. So I have been supporting a lot of startups. I am guiding them, mentoring them, and it's part of my passion, and that's why I do. Because I feel Yes. learning is a two-way process. All learn from each other. So I also end up learning and imbibing energy back. Sir, so my first question was that if a startup founder starts his own startup for the sake of money, like we have seen many times that once we raise our funds and we have the some percent equity of the company, we can become millionaires, but on paper. Many people get Yeah. fascinated by that fact, and many people start the startup just for the sake of money. So, do you think is that a correct part or a correct way of starting a startup? Yeah, so it's like this, I don't think Shah Rukh Khan came to movies for money. So acting was his passion. And money is a byproduct of your passion. If you are really putting your best effort, I'm sure, you will be successful. And once you become successful, money will come. Same, you can look at, Dhoni, you can look at Sachin Tendulkar. Nobody came for money. They came for the passion of the game, and that's why they are there. Similarly, if you really feel that there is a problem in the market which you can solve, which can help people, and if you are successful at solving that problem, it creates value for the customers, then money will happen. But just for the greed of money, if somebody is trying to do, probably he may not be successful. कहते हैं कि greed is good, Mhm. but always, greed also should be for your passion. So money is a byproduct. That's what I think. तो आजकल वो जैसे शार्क टैंक का वो चल रहा है ना, it become Yes, sir. everybody wants to be, into startup and Hmm. become rich. तो वो सब स्टेज बाद में आती है. पहले you have to be firm on your idea. Mhm. तभी आओ जब वाकई में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो, Huh. आप लोगों की हेल्प करना चाह रहे हो, और उस हेल्प में आपकी हेल्प हो जाएगी. Okay. Yeah. Sir, my next question was that since I have an idea and I really want to get into that field, what fundamental questions should I ask myself before starting my startup? Like a few questions which I must ask for myself. Yes. Yeah. So, Siddharth, see, what is very important is people say that they want to create a startup and they want to sell their product, they want to sell their solutions or services. मेरा क्वेश्चन होगा, क्या आपने पहले कभी कुछ बेचा है? That's number one. And number two, क्या आपने वैल्यू पे बेचा है? Mhm. अब आप 10 रुपए की चीज 2 रुपए में बेच दी हो तो कोई भी बेच सकता है. Mhm. लेकिन क्या 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बेची है, 12 रुपए में बेची है? So first of all, you should have that knack of selling your idea, selling your product, selling your concept. वो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है, so you need to develop that. नहीं तो आप हर स्टेज पे फंस जाओगे. आप अपनी आइडिया को प्रमोट नहीं कर पाओगे, आप उसके लिए फंड रेज कर नहीं पाओगे, आप बैंकर को कन्विंस नहीं कर पाओगे, आप अपने कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाओगे. सो यू नीड टू इम्बाइब दैट आर्ट ऑफ सेलिंग. तो कई लोग कहते हैं ना, जैसे कि यार सेल्स एंड मार्केटिंग मुझे पसंद नहीं है. व्हाट दे फॉरगेट इज
इवन आपको जॉब लेने के लिए यू आर सेलिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू। अगर आप कोडर हो तो आप अपने कोडिंग स्किल को सेल करते हो उसके सामने, देन यू गेट जॉब। So you should have that fundamental knack of selling the things, marketing yourself, convincing people, convincing customers. ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए. And then lot of other things. You should know about profitability. You should know about cash flow. You should know about cost of goods. How will you ensure that you will be able to generate value not only for yourself, also for your customer, also for your team. So what we call all the stakeholders, external stakeholders as well as internal stakeholders. सबके लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओगे तो फेल हो जाओगे, अगर कर पाओगे बन जाओगे. And sir, जैसे like people prepare their pitch deck before they go for raising funds, or before pitching their idea in front of investors. So we know that we must include our cost, our revenue, our profit. So how can one estimate their cost, revenue, and profit before starting up? बहुत अच्छा क्वेश्चन. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई गेट लॉट ऑफ पिच डेक्स जहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं होती और उन्होंने बिल्कुल ही हवा में फेंका होता है. Any investor who is going to put money on your pitch deck, he wants to see how realistic you are, how much detailed analysis you have done for your projections. तो सबसे पहले सबसे पहले आ जाता है कि what is total accessible market for the product which you are talking about. So first of all, that should be very clear. Then what you need to study is in that total accessible market कितने कंपिटिटर हैं, उनका क्या शेयर है, आपके लिए कितनी स्पेस है जो बची है, राइट? उस बची हुई स्पेस में ऐसा तो है नहीं कि आप छलांग मारते सारी पूरी मार्केट खींच के ले जाओगे. पहले वाला 5% करोगे या 10% मार्केट करोगे, या बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन हो गया, बहुत अच्छे फंड्स मिल गए, 25% कर जाओगे. सो दैट नीड्स टू बी प्लान्ड थ्रेडबेयर. फॉर एग्जाम्पल, जब आपने हवाई जहाज उड़ाना है तो पायलट को पूरी ट्रेनिंग ग्राउंड पे दी जाती है. वो सारी साइमुलेशन में सारी चीजें सीखता है कि वेदर ऐसे होगा तो ऐसे उड़ाएंगे, ऐसे होगा तो ऐसे उड़ाएंगे, टेल विंड होगी तो ऐसे होगा. लेकिन जब वो असली में उड़ाता है वहां पे हो सकता है सिचुएशन काफी डिफरेंट हो, बट वो जो की प्लानिंग एंड साइमुलेशन helps you there. Similarly, if you have really exhaustively work, if you have done that, if you have worked your idea, तो फिर आप अपनी प्रोजेक्शंस, अपनी कमिटमेंट्स, अपनी एग्जीक्यूशन को बेटर वे में प्लान कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई गॉट अ पिच वेयर द प्रमोटर इज थिंकिंग कि उसकी वैल्यूएशन 150 करोड़ होनी चाहिए. इन्वेस्टर को सारा कुछ अच्छा लगा, बट इन्वेस्टर कहता है कि इसकी वैल्यूएशन 20 करोड़. एंड he said there is so much gap. ऐसा फाउंडर जिसको अपनी वैल्यूएशन का अंदाजा नहीं है, इतनी ऊंची ऊंची फेंक रहा है, सो दैट बिकम लिटिल डिस्कनेक्ट, क्योंकि आपको रियलिस्टिक एग्जीक्यूशन करने वाले चाहिए होते हैं. आपको ड्रीमिंग इज वन थिंग, ड्रीमिंग इज गुड, बट ड्रीमिंग को एग्जीक्यूशन में करने के लिए यू हैव टू बी रियलिस्टिक ऑल्सो. सो यू विल हैव टू सेट योर माइलस्टोन्स. पहले 1 महीने में ये काम करूंगा, पहले 3 महीने में, क्वार्टर में ये काम करूंगा, 6. तो वो आपके पिच डेक में एकदम क्लियर इमर्ज होना चाहिए. वहीं से पता चल जाएगा इन्वेस्टर को या देखने वाले को कि इसके पीछे कितना काम हो रखा है. So you need to know local trends, you need to know global trends, you need to know total accessible market, you need to know competition, you need to know market share, and you need to also know what is differentiator which you have, because of which customers will give you an opportunity. ये सारी चीजें पिच डेक में बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए. मेरे हिसाब से तो DDLJ टाइप पिक्चर चलनी चाहिए पिच डेक जब आप प्रेजेंट करते हो. शुरू से एंड तक स्टोरी एकदम कनेक्ट होनी चाहिए, और वो कनेक्ट होगी जब आपने उतनी परफेक्शन से उस पर काम.
नहीं तो डिस्कनेक्ट आ जाएगा और फिर वो समझ में आ जाएगा कि ये बेसिक काम नहीं हो रखा. एंड And दिस sir, इज सिद्धार्थ, दिस इज वन ऑफ द रीजन. मैं नहीं कहता कि सिर्फ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स के बच्चे आईआईटी या आईएम वालों को ही फंडिंग क्यों होती है और दूसरों को भी होती है बट कम होती है. वो रीजन नहीं है. रीजन वही होता है कि ड्रीम तो बहुत लोग करते हैं, आइडिया तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो बहुत डीप एनालिसिस कर सकते हैं वो नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं. कि उनका एनालिसिस बहुत डीप होता है, उनकी प्रोजेक्शन बहुत शार्प होती है, उनकी एग्जीक्यूशन माइलस्टोन बेस बहुत शार्प होती है. और वहां पे वो स्कोर कर जाते हैं क्योंकि वो उतनी मेहनत पहले भी अपने कामों में करके आए होते. सो एनीवन कैन डू इट प्रोवाइडेड ही executes plans it properly. And so what are certain costs which one faces while preparing his pitch deck? For example, that I'm taking into account all my general expenses, but what are some expenses which generally majority of people forget into to take into account? बहुत सारे. जैसे आप जब असेसमेंट करते हो आप अपनी फिक्स चीजों को लेके चलते हो बट हर जगह एक वेरिएशन रहता है उसमें. आप मानोगे कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्स है, एक्चुअली इट कैन वेरी टू 1.25x, 0.75x also. So sometimes you will have excesses, sometimes you will have shortages. So that delta also needs to be taken care. Marketing expenses should be well planned and taken care. कई बार वो नहीं ढंग से लिए होते, कई बार वो बहुत ज्यादा लिए होते, कई बार वो बहुत कम लिए होते. Then you have to also plan for raw material, marketing, manpower, and when are you going to hire that manpower, at what milestones, what time period. That all needs to be thought. नहीं तो आपकी कैलकुलेशन वहां गलत होगी. और अगर आपकी कॉस्टिंग की कैलकुलेशन मिस करोगे, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, देन आपके मार्जिन्स पे, आपकी फाइनल नेट प्रॉफिट पे, आपके कैश फ्लो पे बहुत असर पड़ेगा. And sir, how can we estimate our like just an approximate idea of our revenue? For example, if we are for example, a market size is of let's say $90 billion, and if I'm capturing 5% of the market for that particular idea, so given these numbers, how can I estimate my revenue? नहीं नहीं, देखो ये होता है आपको accessible market opportunity versus you are saying you will have 5% of market captured, but it really does not work that way. अब आप मान लीजिए कि आपने 90 मिलियन को थोड़ा और आसान कर देते कि आप बोलो कि टोटल 100 है, तो 100 में से आप कह रहे हो कि मैं 5 कैप्चर करूंगा. तो टोटल मार्केट मान लीजिए 100 करोड़ है तो आप 5 करोड़ करोगे. बड़ा सिंपल. बट इट एक्चुअली डज नॉट लुक दैट वे. क्योंकि जब आप करने जाओगे ना तो आप साल के एंड पे 5 करोड़ लिख दिया कि मैंने 5% मार्केट शेयर कैप्चर कर दिया. इट डज नॉट वर्क दैट वे. यू विल हैव टू रियली प्लान. पहले महीने में कितना करोगे, कितना करोगे मीन्स एक कस्टमर से अगर आपको ₹10 आएंगे तो 5 करोड़ के लिए आपको 1 करोड़ कस्टमर को पहुंचना या 1 करोड़ बिल जनरेट करने पड़ेंगे. पहले महीने कितने जनरेट करोगे, दूसरे महीने कितने जनरेट करोगे. Okay. ऐसा तो आप इक्वल करोगे क्योंकि आपने छलांग मारी और आप चैंपियन बन गए, वैसा तो नहीं होगा. पहले हफ्ते आप 5 कस्टमर को करोगे, दूसरे हफ्ते आप 50 को करोगे. तो वहां हर जगह पे आपको प्लानिंग, यू हैव टू बी रियली जुडिशियस इन टर्म्स ऑफ योर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव टू प्लान योर फंड्स. यहाँ पे जब मेरे 100 कस्टमर से 10,000 कस्टमर ले जाने, तो वहां पे मुझे 2 और सेल्स या मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव करने पड़ेंगे. उनका कॉस्ट कितना होगा, उनका कॉस्ट एक्स होगा. तो वहां पे उतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी. 1,000 का रेवेन्यू बढ़ेगा, कॉस्ट 2 एग्जीक्यूटिव की बढ़ी, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी या बॉटम लाइन पे क्या फर्क आ रहा है. ऑल दैट नीड्स टू बी मेजर्ड. वो कहते हैं ना, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड. अब जितना कर सको, जितना उसको शार्प कर सको, उतना ही फायदा है. और एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ. व्हाट यू नीड टू डू इज, जिस सेक्टर में आप जा रहे हैं, go and see who are the existing players and study their numbers as much as possible. Dive deep into that. Look at what cost they have, what margins they have,
how much is going into their manpower cost. Everything can be seen and learned from there. So dive deep into that as much as possible. Okay, sir. And sir, do you think MBA is useful for startup founders? Absolutely, but not always. देखो, दो चीजें हैं, एक पढ़ना है और एक पढ़ने को यूटिलाइज करना है. सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, रिचर्ड ब्रांसन की. द गाय वर्जिन ग्रुप के, Yes, sir. ही इज Yes, अ sir. बिलियन, and he has Virgin Airline, Virgin Music, and Virgin Mobile, and blah He blah. even has his own He spaceship said, company, spaceship Virgin company, Atlantic. Virgin Atlantic Galactic, something like Yes, that. sir. Something like that. Yeah. So what he says, 2 and 2 is not 4. 2 and 2 is not 4 until it happens in my hand. मैं कैसे मानूं 2 और 2 4 होते हैं जब तक वो नहीं हो रहे. समझ रहे हो? उस मैथ का पढ़े हुआ का कोई फायदा नहीं है जब तक आपने उसको अप्लाई नहीं किया. मेरे हाथ में तो 2 और 2 5 होते हैं. 2 और 2 तो 4 कॉस्ट होती है, 1 रुपए की मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ तो मेरे हाथ में वो 2 और 2 5 होंगे. तो सेम वे, अगर आपने एमबीए करी है तो अगर तो आप उस एमबीए को यूज कर रहे हो, देन इट मेक सेंस. कई लोग ऐसे भी हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं बट वो बेटर हिसाब करते हैं. लुक एट आवर फेमस मारवाड़ी कम्युनिटी, Yes, sir. पंजाबी बिजनेस फैमिलीज, गुज्जू गुज्जू फैमिलीज, हर किसी के अपने ट्रेट है. तो आप कितनी बेटर उस एमबीए को एग्जीक्यूट करेंगे या उसको यूटिलाइज करेंगे, दैट विल मेक द डिफरेंस. एक क्लास, एमबीए की क्लास में से एक्स नंबर ऑफ बच्चे निकलते हैं बट सारे एक जितने कामयाब नहीं होते. सबका फर्क अलग अलग है. व्हाट मेक्स दैट डिफरेंस? हाउ डू दे अप्लाई देयर नॉलेज? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? And so startup founders initially अकेले start करते हैं. So according to you, what should be the like the milestone after which they should start hiring? Just 1 sec. Yeah, no problem. Sir, usually startups founders start alone. Like initially they are alone. So according to you, at what milestone should they start hiring? Like after a certain progress has been made, now I should start hiring. So there are 2 ways, of doing it. One, uh, so when you're really passionate about your business, you will see that initial work when you have done, आपके पास इतना काम होने लगता है जो ओवरफ्लो होने लगता है, and you are not able to now manage it. So you people there, then you hire. जैसे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. बिजनेस स्टार्ट किया अकेले, जिसको बोलते हैं सोलोप्रेन्योर, बट इतने कस्टमर हो गए, इतना हो गया, अब आपसे नहीं संभल रहा, देन यू नीड टू हायर पीपल. दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड अप्रोच. सेकेंड अप्रोच इज व्हेन यू हैव प्लान्ड वेरी वेल, देन यू नो कि मेरे को इतना काम पहले क्वार्टर में करना है तो मुझे इतने लोग तो चाहिए होंगे, बिकॉज यू नो द क्वांटम ऑफ वर्क, यू हैव डन डिटेलिंग अराउंड दैट, ये इतना काम चाहिए होगा इसमें. So that is the second approach where you are doing as per your planning. So first you can have based on how much you can do yourself, and then what is the stage when you really need people to delegate things. तो बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर भी इनिशियल काम खुद कर लेते हैं. नाउ आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ टेस्ला. Elon Musk was working in his garage along with this another partner or brother. So there were 2 of them. तो वो दोनों ही मैनेज कर रहे थे. शुरू में अकेला ही कोडिंग कर रहा था, बट इट केम टू अ पॉइंट वेयर दे हैड टू हायर पीपल बिकॉज अब बिजनेस बढ़ने लगा था. vis-a-vis now these days, when people are coming with their pitch decks and plans crystal clear, so then they hire based on that because they know कि 1 साल में उनको कहाँ पहुंचना है, 6 महीने में कहाँ पहुंचना है, कितने लोग लगेंगे, अकेले से नहीं होगा. So that analysis you will have to do, how much you want to do initially and how much you want to uh, plan and hire, based on your plan. Also, very important question here. When do you need a co-founder? It's always good to have a founder who complements
योर स्किल्स। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि most of the companies hire somebody who is very good in IT or some, but the other person is very good in finance and raising capital in time, regulatory, legal, operations. So you need to have complementary skills. क्योंकि जनरली एक आदमी सारे स्किल होते नहीं है. So either you can have co-founder from day one, somebody and you gel well. It's a marriage, which should last long. Or you can find out a co-founder with similar with these kind of traits. वो आपको ढूंढना पड़ेगा. मेरे पास कई सारे पिच डेक आते हैं. मैं उनको सीधा बोलता हूँ कि यार प्लीज आपका आइडिया अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट गेट वन co-founder from this field and it will help. And sir, according, what should be more important, like for a startup founder, soft skills versus hard skills? Like hard skills, I mean the technical side, and soft skills, I mean the management side. दोनों ही इम्पोर्टेंट है. यही मैं मतलब जैसे co-founder की बात कर रहा हूँ, या ये सारे स्किल मिला के आपको परोसना है. अगर आपको एक डिश परोसनी है किसी को, तो आपको सब उसमें सॉल्ट, मिर्ची, मसाले सब कुछ करके एंड रिजल्ट सही आना चाहिए. आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सेल्स सबको मिला के रिजल्ट हैज टू बी द ऑप्टिमम और best possible in that circumstances. So you need to have the whole mix of things which are needed for that kind of business. अगर आप कंसल्टेंसी में है तो उस कंसल्टेंसी के रिलेटेड सारे फील्ड के लोग होने चाहिए या सारे फील्ड का नॉलेज आपके पास होना चाहिए. अगर आप किसी आईटी बिजनेस में है, सो उस आईटी के रिलेटेड सारी चीजें, सारे डिपार्टमेंट आपके पास होने पड़ेंगे. Either you can do most of the departments yourself in the beginning, or you should hire the specialized people. Again, based on your plan and model, and where do you want to reach. A bootstrap startup versus a startup which have raised funds, which according to you should is better? Initially, to some extent, it should be always bootstrap, and you should finish some part with bootstrap approach, unless you have somebody who is already loving your idea and he's ready to put some money. So best is bootstrap in the beginning and do the basic work, so that you have something to convince. You can convince investors. हमारे जमाने में लास्ट years में क्या होता था, so there were no investors available, so we used to go to bank and we used to debt, and later on we got investors and we retired that when investors money came in. बट मैं हमेशा एडवाइस दूंगा कि कुछ एक्सटेंट तक बूटस्ट्रैप करना अच्छा रहता है स्टार्टिंग में, ताकि आप बहुत सारी इक्विटी स्टार्टिंग में लूज ना कर दो. नहीं तो आपको लोग मिल जाएंगे इन्वेस्टर शुरू में, बट शुरू में ही अगर आपका हिस्सा, आपकी इक्विटी बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो आपके लिए बचेगा नहीं. और ऐसा बहुत एंटरप्रेन्योर्स के साथ हुआ. आइडिया किसी का होता है बट दे लूज कंट्रोल वेरी फास्ट, क्योंकि शुरू से ही वो अपना स्टेक बांटना शुरू कर देते हैं. Yes sir, that's important. नेगोशिएशन स्किल्स आर मस्ट. इन्वेस्टर खा जाते हैं, इन्वेस्टर सही में खा जाते हैं कंपनी को अगर आप नेगोशिएटर अच्छे नहीं हो. आई हैव सीन लॉट ऑफ गुड स्टार्टअप प्रमोटर्स. उनका बिजनेस बहुत अच्छा था, but they ended up losing control of their company and they were even they had to exit from the company क्योंकि उन्होंने स्टेक बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया. So you should know कितना देना है, कितने पे देना है, कब देना है, नहीं देना है. वो सारा मैथ्स है, वो सारी एमबीए है, और वो एमबीए यूज नहीं है. एमबीए पढ़ने के लिए नहीं है, एमबीए यूज करने के लिए. अगर आपने एमबीए करी है बट अगर आप मैथ्स यूज कर रहे हो, दिमाग यूज कर रहे हो, लॉजिक यूज कर रहे हो. हाँ, so bootstrap में, as I said, and you were at the ideally part you bootstrap. Where you said that founders lose much of their equity and they have to make their own exit. So if you are not good in analyzing and negotiating properly, you end up losing control of the company. So you have to be very clear कि कितना इक्विटी देना है, किस वैल्यू पे देना है, कब देना है नहीं देना है, लंबे टाइम तक कंपनी अपने पास रखना है, एक लेवल तक उसको इंक्रीज करके आपको एग्जिट करना है. वो सारा आपको सोचना पड़ेगा और उस सोच के बेस पे आपका डिसीजन होगा.
कोई है उनको पहले 5 या 10 साल में बना के अपनी कंपनी बेचनी है, तो उसका फिर मैथ ने बेचनी हो फटाफट वैल्यूएशन बढ़ाएगा और एग्जिट कर जाऊं इतना पैसा बना जाऊं। लेकिन उसके ये भी हो सकता है जिसको अपनी लाइफ टाइम वो कंपनी खड़ी करनी है कि मेरे पास कंट्रोल रिलायंस है, यू नो, सो दे वांट टू कीप कंट्रोल, सो दे विल नॉट डाइल्यूट, क्योंकि कोई भी पैसा दे देगा उनको फटाफट फिर सारा खत्म, दे विल नॉट डू इट। वी हैव टू रियली थिंक थ्रू, मैथ्स पूरा लगाना पड़ेगा। And sir, one last advice for college students who want to start your own startup. Just one advice for them. One advice? Yes sir, just one advice. Use mathematics in every decision to make, and जो आपका पैशन है, जो आपको दिल से आवाज आ रही है ना, वो वाला स्टार्टअप करना, वो वाले आइडिया पे लगना, नहीं तो वो बीच में ही छूट जाएगा, सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। Okay, sir. Sir, those were some really good points, and I also made notes of them. And I would suggest the viewers to make their notes as well, because it helps. It really helps. Making notes. Most welcome, Siddharth, and Yes, you sir. can Thank you so much, contact sir, for me your anytime Yes, sir. for anything.